में book 1 Canto 4 the secret knowledge रा 4th section complete करिकी आज 5th section begin करिवा 4th section पर्यंत रा गोटे snapshot summary we have completed last but one class, and there has lot been now connection across from the beginning of this canto till this 4th section. The 5th section is very exclusive in the sense it is one of the biggest mysteries or secrets that is revealed to the human mind in terms of its conceptualization and in terms of its application also when it comes to interpreting the entire world. A panchama section T secret knowledge canto रा गोटे गुरुत्वपूर्ण सेक्शन एथिपाई कारण से एमती गोटे मिस्ट्री एमती गोटे रहस्य को उन्मोचन करुची जहा मानविक ज्ञान समूहर गोटे बहुत उपादेय रहस्य भितर गोटे से बहुत किछि रहस्य को एई मूल तत्व भित्तिक जो आधारटी रहिछि पुरुष और प्रकृतिर वर्णना रे से ताकू उत्तम भाव बुझी परिबो. तेबे आमे किछि लाइन्स आगे फर्स्ट आज पढिबा and then we will start with the explanation. Perhaps I'll put everyone on the lecture mode a minute. So we all are on page number 63, book 1, the book of beginnings, canto 4, the secret knowledge, page 63, line 617. This is the knot that ties together the stars. The two who are one are the secret of all power. The two who are one are the might and right in things. His soul, silent, supports the world and her. His acts are her commandments registers. Happy, inert, he lies beneath her feet. His breast he offers for her cosmic dance, of which our lives are the quivering theatre, and none could bear but for his strength within. Yet none would leave because of his delight. His works, his thoughts have been devised by her. His being is a mirror vast of hers, active, inspired by her, he speaks and moves. His deeds obey her heart's unspoken demands. Passive, he bears the impact of the world as if her touches shaping his soul and life. His journey through the days is her sun march. He runs upon her roads. Hers is his course. A witness and student of her joy and dole, a partner in her evil and her good. He has consented to her passionate ways. He is driven by her sweet and dreadful force. His sanctioning name initials all her works. His silence is his signature to her deeds. In the execution of her drama's theme, in her fancies of the moment and its mood, in the march of this obvious ordinary world,
where all is deep and strange to the eyes that see, and nature's common forms are marvel weight. He, through his witness, sight, and motion of might, unrolls the material of her cosmic act, her happenings that exalt and smite the soul, her force that moves, her powers that save and slay, her word that in the silence speaks to our hearts, her silence that transcends the summit word, her height and depth to which our spirit moves, her events that weave the texture of our lives, and all by which we find or lose ourselves. Things sweet and bitter, magnificent and mean, things terrible and beautiful and divine. Things terrible and beautiful and divine. पेज 63 रो आरंभ रे जो अल्प किछि लाइंस रहिछि सेक्शन 4 रो, it ends on a term, in 1,000 ways he serves her royal needs. सेठी मध्ये से ही और हर कथा चलती. He makes the hours pivot around her will, makes all reflect her whims. All is their place. This whole wide world is only he and she. Kintu na hero H capital achi, na hero S capital. Tapara section D start hochi. This is the knot that ties together the stars. तेणु जेहेतु सेक्शन टी आरंभ ही दिस रु हेछि, तेणु स्वाभाविक प्रश्नटी हबो which knot. This is the knot. केउ knot कथा कोड आसिला आउ दुईटी तारा को बांधिवा कथा. knot माने कोन ठीक. This is the knot that ties together the stars. तेणु stars मान को बांधी रखिछि ये केउ गंठिटी, ये केउ गंठिटी बा ये केउ गोटे कॉम्बिनेशन, गोटे जॉइंट, गोटे कोलैबोरेशन, गोटे पार्टनरशिप ना कोन. कारण नॉट रो व्यवहार तो टाइम नॉट्स माने तो आल्सो पार्टनर. यू नो इफ एट ऑल इट इज अ पार्टनरशिप, कहा भीतर ये पार्टनरशिप जे इट इज पुटिंग और इट इज अलाउइंग द एंटायर यूनिवर्स टू स्टे टुगेदर. So it is basically the stars here signify this entire world. एटी कोनोसी पर्टिकुलरली दिटा यूनिवर्सल बा सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट कथा कुआहिनी. एटी स्टार्स माने होती संपूर्ण जगत. ए संपूर्ण जगत को से जेपरी अछि सेही परि भाबरे तार संभूति रे, तार मैनिफेस्टेशन रे, तार क्रिएशन रे से बांधी की रखिछि, बस ये हेल्ड टुगेदर करिकि रखिछि, होल्ड टुगेदर करिकि रखिछि. एटी पई because there is a knot, because there is a partnership, because there is a collaboration, because there is a complementarity between these two. This is the knot that ties together the stars. What knot? That this whole wide world is only he and she. एक पुरुष प्रकृति की प्रवेश करने पूर्वरु आपण मानकु मु टिके आजी प्रथमे फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग बा गुटे थियोरिटिकल मु कहबी, इनफैक्ट थियोरिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इट एक्चुअली मीन्स टू बी पुरुष एंड प्रकृति. गोटे मिनिट. नॉर्मली आमे जेबे भी पुरुष प्रकृति कथा कहू, लास्ट क्लास मध्ये मु डिस्कस करथली से जे वी शुड नॉट बी थिंकिंग ऑफ अ जेंडर बेस्ड टर्म. कहीं से सीमित हो गले कौन जदि से थॉट प्रोसेसटा ही कवर करके रखिबो माइंड को कि पुरुष कहला बेलू मेल फिगर एंड प्रकृति कहला बेलू गोटे
नारीर फिगर ना महिला बोली आम पुरुष और महिला कहते सेमती पुरुष प्रकृति को भी जदि सेमती भाविबा आरंभ करिबा जदियो there is a beauty in this duality of man and woman which in some terms at a very grassroots level represents this great theory of purusha and prakriti but gote gender ba gote sexual aspect re jinsati ko bujhiwata gote very सीमित limited and not for use meaning he gote I'll just take gote bahite rahichi glossary of terms in Sri Aurobindo's writing सेथिरे पुरुष एंड प्रकृति रो गोटे माने जोठी जोठी श्री अरविंदो लेखा रे डेफिनेटिव टर्म्स रहिछि पुरुष और प्रकृति को नै की से गोटे सुंदर उल्लेख टिए रहिछि आई विल जस्ट रीड इट एंड देन वी विल एंटर इन द पुरुष is the silent witness consciousness which observes the actions of prakriti श्री अरविंदो का लेखा CWSA volume number 22 page number 301 Purusha is the silent witness consciousness which observes the actions of Prakriti. Prakriti is the force of nature which one feels as doing all the action. When one gets rid of the sense of the ego as doer. A second part को we will come later. Ego वाला aspect रे confuse करिबिनी. तेणु गोटे यदि साधारण भाव रे आमे केवल पुरुष कोन प्रकृति कोन बुझिबा तबे पुरुष होउछंती एक नीरव द्रष्टा चेतनमय द्रष्टा जे प्रकृतिर प्रत्येकटी कार्य को ऑब्जर्व कर तापरे कहले वॉल्यूम 17 पेज 51 existence is composed of prakriti and purusha the consciousness that sees and the consciousness that executes and formalizes what we see. The one we call soul, the other nature. These are the first double terms from which our yoga has to start. When we come to look in at ourselves instead of out at the world and begin to analyze our subjective experience, we find that there are two parts of our being which can be to all appearance entirely separated from each other. आउ सेटा ही मनुष्य मनर गोटे विशेषत्व आमे संडे क्लास डिस्कस करथले ना केवल मनुष्यर मन ही ए कैपेबिलिटी अछि जे से चेतना को मध्य विभाजित करिकि देखि परिबो अन्य कोनोसी जीव जंतु रे से सामर्थ्य तांको मन गुडी करे नाही मन तो सेठी डेवलप्ड नुह इवोल्यूशनरीली किंतु मन मनुष्यर मन रे से चेतना को मध्य विभाजित भाव रे नियोजित प्रयोजित आउ ताको उपयोग करि परिबो जिंस कोन जे कोनोसी जिंसटी को बुझिबा पा तेबे मुख्यतः जेतेबेले जणे जो साधना निजर आरंभ करे ता पाखरे चेतनार ए दुईटी स्वरूप प्रथमे आसी उपनीत होय प्रथमटी होची आत्मा द्वितीयटी होची प्रकृति अति सहज भाव रे से गोटे को विदिन आ गोटे को विदाउट बोली बुझी जाई पारे किंतु से ता थारु जे अलगा से क्रमटी को हमें एडी टिके ए सीक्रेट ऑफ द नॉलेज कैंटो रे बुझिबा को चेष्टा करू किंतु आरंभ स्थल रे आपण जानि थांतु सोल आउ तार नेचर ये बाहर प्रकृति कथा एठी पड़ी आदो कंफ्यूज हेबेनी हमें बहुत स्लोली ए फिफ्थ सेक्शन टी को नेबा काइना ये हमको श्री अरविंदों अन्य अनेक लेखा को बुझिबा पई बहुत सहायता करी
how we will discuss everything that has been written on Purusha and Prakriti while covering this section under this canto. tebe Purusha jodi soul हुए tebe तार जो एक्जिस्टेंशियल बीइंग अछि जोठी एबे से निवास करूछि सेथिरे जो प्रकृति कार्यरत अछि सेथिरे तार the ownership still lies with the soul only, is the nature. It is not the outer nature, outside nature, माने आउ कहार. It is not about these mountain trees and ये क्या ताकू ये nature कहउछ ना एते दिन ला गुटे शब्दर तो पुनी मर्यादा रहिछि से जोठु जेमिति आसीछि से तार सेमिति निर्वाह करियो ता काम. तेणु मु जदि नेचर 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 कहि चलियो आपण प्रकृति प्रकृति हिसाब रे बुझी चलियो पहाड़ पर्वत झरना गछ जंगल सरिगला कथा आउ सेथरे ताको आउ रिलेट कला को आउ गोटे रीडिंग दरकार. why we come back to this kind of. So let us understand when we say nature here, it is the nature, character, property, attribute, features आपण जेमिति ताको बुझी परिबे निजर मनर लिमिटेड डिक्शनरी भितरु काडी is that it is the nature of the soul. The nature we speak here is the nature of the soul. These are the first double terms, soul and nature. Nature kahar sei sattar a soul kahar soul to kahar soul ro jo satta rahi tar nature soul joti embody hi se jo nature ti ku nei that is the prakriti there and the Purusha is the soul. When we rise to a universal level, then it is the appropriation of these two terms, Purusha and Prakriti. Beauty. Purusha huchandi, the one who is at the root of this entire creation's existence. How ta bhitere siye immanently achandi. How jo bahya prakriti ye vishwa jagat jo gadi ukichi prakriti ebe eithi jo prakriti katha ame कहउछंदी, it is this entire universal nature. So the universal soul is the Purusha there and the universal nature is the prakriti that we see. ei dita prakriti alga एटा हम गला क्लास रे कोनोतली ए लोकर प्रकृति टा एमिता से लोकर प्रकृति माने पहाड़ जंगल नुहे नदी झरना भी प्रकृति से लोकर नेचर. And then there is another nature which is universal nature. Au pade jodi upru ku uthi jiba where this Purusha and Prakriti lies under the envelope of time and space, but when we go a little above timeless and spaceless, then they become the Ishvara and Shakti. Ishvara and Shakti, which are the godheads of this rolling out of manifestation. ये जो संभूति की से ईश्वर और शक्ति रो माधुर्य और ऐश्वर्य को नेकी गढ़ी उठीची बा तांकरी सत्यम शिवम सुंदरम से शिव और शक्ति रो नृत्य रो जगत की जात हेची. That Ishvara and Shakti is a step above the time or space envelope upar. So we can say jodi manara shrinkhala dekhiba beyond the overmind, it is in the state of Ishvara and Shakti. But again, that is under manifestation. It is timeless, it is spaceless, but under the manifestation. Or we can say under the beginning of the manifestation, ruling it, governing it. But Aupade upurku gale, we see at the state of the Sachidananda. When Sachidananda just unfolds himself from one single Sat Chit Anandaru, se jetebale ekru bohu heba pai just ichha prakat karchanti, setebale tanko bhitere je duiti aspect क्रियान्वयन हेछि बा दुईटी एस्पेक्ट जात हेछि सेही दुईटी एस्पेक्ट रो प्रथमटी होछि कि किछि गोटे फॉर्म को आसीबा पई हेले प्रथमे तार एक्जिस्टेंस हैज टू बी ट्रुथ. हाउ से एक्जिस्टेंस टी गोटे कॉन्शियस एक्जिस्टेंस हेतिबा दरकार, तेनु चेतना थिबा दरकार.
ଆଉ ସେଇ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ଦ ପରମେଶ୍ୱର and ପରମେଶ୍ୱରୀ। ତେଣୁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରେକର୍ଡ ଅଫ योगाର ସେ ଡାଇଗ୍ରାମ ଟା ଭାଇ କେତେ शेयर କରିଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମନେ ପଡିବ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଦ absolute being ଯିଏ ରହିଲେ ଉପରେ ତତ୍ ତାପରେ सच्चित आनंद सच्चित आनंद रु जेतेबेले क्रिएशन जेतेबेले मैनिफेस्टेशन रो कथा उठिला देन वी हैव द परमेश्वर एंड परमेश्वर both at the state of timelessness spacelessness but it is just at the level where everything starts because he is the super existence and she is the super consciousness and then at the level of super mind you find the Ishvara and the Shakti जे ए मैनिफेस्टेशन टी को सत्यर आधार रे एक रु बहु भाव रे आरंभ करिवे आ जेतेबेले मैनिफेस्टेशन क्रिएट होउची दे कम डाउन एज पुरुष एंड दैट विश्व पुरुष एंड विश्व प्रकृति एंड व्हेन इट कम्स टू द इंडिविजुअल आवर तीनटा स्टेट द इंडिविजुअल द यूनिवर्सल एंड द ट्रांसेंडेंटल. So in the transcendental spheres also there is this super mind consciousness and then above that is the Sachidananda consciousness. So at the Sachidananda consciousness Parameshwara Parameshwari, at the super mind consciousness it is the Ishvara Shakti, at the universal consciousness it is the Purusha Prakriti, at the individual consciousness it is the soul and its nature. एक कथाटी को मुझे जदि शेष जाई नेबी ताले हुए तो किछि पॉइंट हम मिस कर जिबा सो आई विल मेक अ वेरी स्मॉल पॉज हियर वी आर एट 6:25 जदि या ऊपर के किछि काना एठू ए ताळटी को छाडी देला माने अलगा स्वर आरंभ होई जिवो तने जदि के किछि पचारिबा को बा किछि आउ जदि शेयर करिवा को चाहतांती फॉर बेटर क्लैरिटी ऑफ एवरीबॉडी काना फिजिकल थिले तो वी वुड हैव एक्सचेंज्ड आइडियाज कि मु लूज करिया को चाहूनी आपण मानकर सम सजेशंस ए टाइम रे सो आई जस्ट अनम्यूट कहार जदि किछि एठी ऐड ऑन करिवार थिबो किछि कहबार थिबो इन 2-3 minutes and then we will resume from here into the context we are setting. Just go 10 minutes. unmute करके कहि परबे जदि कहबे और आई विल कंटिन्यू. हेलो हां भाई कोन when we talk of our soul we talk of the mother element also associated with that, is it not? Yes. So then you call it as the Purusha element, nahi? The Prakriti element. The mother element is the consciousness element. And consciousness is with the nature. Consciousness, soul ro consciousness huji nature. Let us understand it this way कि गोटे जिनसटी एग्जिस्ट करूची माने तार गोटे एक्जिस्टेंशियल प्रिंसिपल अछि से एग्जिस्ट करि परिबो जेमति मु केथर कहिची ट्रुथ रो गोटे एक्जिस्टेंस अछि फॉल्स रो एक्जिस्टेंस नै ट्रुथ रो एब्सेंस होची फॉल्स नॉलेज रो गोटे एक्जिस्टेंस अछि एब्सेंस ऑफ नॉलेज इज इग्नोरेंस सेमिति there could have been nothing in existence if the truth element is not there. So the truth element supports its existence. किसी अच्छी सत्य ये जो सत्य शब्दटी मध्य सत्य ही है and सत्य is existence. तेणु soul अच्छी that is existence, only existence. But soul रा action, soul रा consciousness, soul रा psychic growth, soul nature is everything under mother's consciousness. सेटा चेतना ताकू मां सहित कहीं जोड़ा है केन दैट इज जो पूरा लैडर ता कहली ना परमेश्वरी शक्ति प्रकृति एंड देन द आत्म प्रकृति. तो जदि आत्मा रे प्रकृति को मुझे आत्म प्रकृति कहबी तले से आत्म प्रकृति लेवल रे इट इज दैट मदर चैनल ओनली व्हिच इज कनेक्टिंग एंड जिता हमें को कि कॉन्शियसनेस one has to understand हम सब चित्त तपस हिसाब रे भी बुझिबा जदी चित्त शक्ति हिसाब रे बुझिबा जदी then it is that just because आ यार गोटे रहस्य एति पई भी काहे कि हमें काहे कि
गोटे पुरुष आ गोटे नारी एस्पेक्ट रे सब बेले एटा खसी जाइछु एना वैदिक एलिमेंट रे कौनसी आधार नथिला प्रथमे डुआलिटी को बुझिबा पई तांका पाखरे ए दुई तीन टी एलिमेंट ही थिला कोन कोन आलोक और अंधकार सत्य बा विद्या और अविद्या सत्य बा मिथ्या जीवन बा मृत्यु आउ पुरुष आउ नारी ए चारि पांचटा डुआलिटीज तांका आगे थिला so the one where they could bring both of them together and exist is purusha and nari that is why there is everywhere he and she apna ko dita ko sangre exist करे परिबेनी sangre kana अन्य आउ दुईटी जकरे existence of one is absence of another से आलोक अंधकार हो सत्य मिथ्या हो विद्या अविद्या हो वैदिक एलिमेंट रे the only he and she could be brought together सेति पाई पुरुष ओ प्रकृति शब्दटी को निया गला very good thank you so we'll proceed ahead किंतु हमें ट्रांसेंडेंट बा सुपर कॉन्शियस लेवल रे कोन हमें उपलब्धि कर परिबा हां सुपर कॉन्शियस लेवल रे वन यू कैन डिवीजन सुनतु डिवीजन बिगिन ओनली after the superconscious level division actually starts from the overmental level माने हमें overmental से माने they were one but say one can be the many ए जो conception था ए जो understanding था इटा केवल overmind रे ही possible है supermind level रे there is no division at all it is the world of unity सेठी दुई देखा गले भी दुई देखा जीवेनी it is only at the overmind you can see two tenu je overmind world ro upare baschanti just at the top of it are the Ishwara and Shakti just to separate them but when it comes to Parameshwara and Parameshwari it is like that Ardhanarishwar gote pakha Shiva ଆଉ gote pakha Shakti acha ha individual level re soul and nature individual level re it is soul and its nature soul nature it is not that outer nature निजर नेचर निजर जो बाह्य प्रकृति टी से बनै छी ना सोल तो सीए भी जति एक्शंस करछि जहा सीए भाबुची ईगो रो ऑर्डर रे जहा से भाबुची इग्नोरेंस रो ऑर्डर रे जहा से भाबुची फॉल्सहुड रो ऑर्डर रे से सब होची तार नेचर और से ता द्वारा से खेलुची विद्या अविद्या तारी साथी सेठी प्रकृति सोल नेचर रे भी विद्या माया और अविद्या माया ए दुई जण ही ताको खेलुछंदी सेठी तो उपन जे आपनकर वेदांत एस्पेक्ट रे जो तीनोटी जिंस को जाईची ब्रह्म जीव माया तो द ब्रह्म एस्पेक्ट को बुझिबा कहले जीव और माया ए दी जण को मुक्त हेबा को पड़िबो जीव मुक्त हेले ईश्वर को जीव माया मुक्त हेले शक्ति को जीव हो एबे हमें मूल पाठ को आलोचना करदबा आगे मूल पाठ को टिके आलोचना करिबा हमें तो दिस नॉट ए जो बंधनटी बंधा आइछि से बंधनटी पूरा ऊपरू अछि फ्रॉम राइट फ्रॉम दैट ट्रांसेंडेंटल एंड अबव लेवल्स only when it comes to the universal level we identify them as purusha and prakriti. Here in this section we are not discussing the soul and its nature, we are discussing the universal duality which is the purusha and the prakriti. Achi tike tike part re we will come across when he says about the soul, about its nature, तो blend he ki achi se jinsa ta ei jinsa ro clarity tike rahibo boli mu aguru ei पाठ टिके आलोचना कली जोठी जोठी हमें पुरुष प्रकृति आउ गोटे बृहत एस्पेक्ट रे तांकर कार्य को बुझुचंती इट स्पीक्स ऑफ द यूनिवर्सल एस्पेक्ट और जोठी जोठी शिवरंग टिके किछि किछि लाइंस मझी रे देइचंती व्हिच स्पीक्स ऑफ द इंडिविजुअल एस्पेक्ट दैट इज अबाउट द सोल एंड इट्स नेचर व्हिच इज गवर्न्ड बाय ऑफ कोर्स द माया. So the stars here in the first line, this is the knot that ties together the stars. Stars here signify this manifestation. They are held together by the knot between these two. The interrelation, the interaction
between he and she is the knot that holds all together. हम समस्त को संगे बांधी के रखी कहीं से पुरुष आ प्रकृति से माने गोटे अतूट बंधन रे बांधी हेकी रहिछन. The two who are one are the secret of all power. समस्त सत्य मूल स्रोत बा मूल रहस्य भाव रे से दुई एक हेकी विराज. The two who are one are the might and right in things. इटा गोटे बहुत बड़ सीक्रेट ऑफ ऑल पावर तो बुझी गले हमें कारण से दुई होचंती सोर्स से दुई ही होचंती एग्जिस्टेंस एंड इट्स कॉन्शियस एक्शन. किंतु जेते बेले कहउचंती द टू हु आर वन देखो एटा को भाबुचन अपन केथर कहिछि श्री अरविंद जेते बेले सावित्री रे कोनोसी रिपीटिशन आनंती अपन संगे संगे तांको चेतना सहित जोड़ी हिजिबे कारण तांकर लेखारे ना शब्दर अभाव अछि ना व्याख्यार अभाव अछि ना पोएटिक जीनियस रो अभाव अछि. बट ता सत्वे से जेते बेले कोनोसी गोटे शब्द को कोनोसी दुईटी अक्षर को संगरे आनी की बारंबार कहउचंती देन दैट इज ए मंत्र. of course every line is a mantra but particularly that phrase is not less than any gayatri. गायत्री रे कोन छंद अछि ना तेनु सावित्री रे जदि छंद खोजिबे ताले श्री अरविंद जोठी जोठी शब्द गुडी को रिपीट करचंती सेठी सेठी वेदर सेई उष्टुप त्रिष्टुप अनुष्टुप छंद को छाड़ देले ये चतुर्थ छंद बोली बुझिबे सावित्री. the two who are one ये गोटे छंद. the two who are one से दुई जे एक याकू ओडिया रे कहि देला माने से छंद से पावर रहिबनी किंतु इंग्लिश रे लिखा हिथिले मध्य ये गोटे कोनसी गायत्री मंत्र ठु कम नै जे द टू हु आर वन याकू गोटे केंद्र बिंदु हिसाब रे चेतना रे जिंसटी रहिले ये चमत्कार आनिबो भितरे. द टू हु आर वन ये द टू हु आर वन आर द माइट एंड राइट. What is might? Existence, strength, power, energy. These are all existential. Again, right is truth. Right is good. Right is beauty. Right is consciousness. So might is existence and right is consciousness. So the two who are one represents the existence. The two who are one represents the consciousness. That existence and consciousness which stands upon bliss is the Aadhar of the Satchidananda to create this manifestation. And the two who are the one are the might and right. His soul, silent, supports the world and her. His कहले पुणी कहले his soul केमती हो कहार soul. So then the word soul here is little indicative of तांकर माने पुरुषंकर जो multiple forms एठी हेछि in the manifestation is all he in them but silent. So his soul, so his refers to the Purusha, the universal Purusha. Avtara pratyekti spark soul in the entire multitude, the entire multiple souls that is there stringed together as his soul. Tamane janakar hi is abu, his soul, silent, supports the world. Ee jagat ri kahi ki achi because the souls are growing. If soul manଙ୍କର existence ei multiplicity ru chali jibo tale sabu kiछि puni ek hei jibo and that is pralay. But if the world is there, if the world is operating, if the world is supported upon something, then it is the Purusha which is there as the foundation. और से केवल जगत टी को नुह से निज प्रकृति को भी संगे रे रखिछि and her. पुरुषर प्रत्येकटी कार्य his acts are her commandments register. प्रकृति जहाँ निज रजिस्टर रे लिखिदेला कमांडमेंट रजिस्टर रे सुने हाई कमांडर डिसीजन तेणु हाई कमांड जहाँ लिखिदेले निजर चेतना बल रे
पुरुष तार एक्जिस्टेंस रे ताकू प्रोड्यूस कर देला ताकू एक्जिस्टेंस को नहीं आसिला चेतना निज को जेमिति खोलिबा को चाहिला चेतना मन रे किछि गोटे ब्राइट आसिला तो पुरुष एठी गोटे हळदिया फूल खेलै देला चेतना मझिरे किछि गोटे शक्तिर जागरण आसिला से नालिया फूल टिए खेलै देला प्रकृति मन रे किछि गोटे विस्तारता आसिला से गोटे बृहत आकाश निर्माण कर देला मोड़ा किछि मनरु काढी की कोनी ये सब उपनिषद र मंत्र गुडिक जो विराट पुरुष केमिति जगत को क्रिएट कले जतबे केही नथिले सहस्राक्ष सहस्रपाद हां किंबे से विराट पुरुष निजर तारी उदर भितर सब किछि क्रिएट कला तो किए करथुला से तार उदर भितर सब किछि क्रिएट इट वाज द शक्ति इट वाज द कॉन्शियसनेस his acts are her commandments registers happy inert he lies beneath her feet ये तार पाद तले रहिबा पसंद करूची अपील पूरा एकदम निश्चल भाव रे his breast he offers for her cosmic dance ये निजर नृत्य तांडव करिवो बोली प्रकृति पुरुष निजर बक्ष को देइछि एठी गोटिए मात्र चित्र सामना को आसुची सेई कालिंकर रूप जोथरे शिव को ऊपर से पाद रखी चंती आ निजर जिह्वा को आगु काट देइचंती महातांडवर नृत्य सेठी गोटे प्रकार रे सृष्टि हेछि जोटी शिव शक्तिंकर पाद तळे अछन so it is actually that vision here even Madhav Pandit writes we spoke last time of how Shiva offers his breast to Kali for her cosmic dance here is Sri Aurobindo's description of the Purusha lying beneath the feet of Prakriti and making possible the cosmic play the cosmic dance is the cosmic play this play not only goes on a universal scale but also in each individual ye kebala this is not only about the universal getting created but inside every individual also the Purusha and Prakriti do this dance jodi soul bhitare roichi a prakriti ku bahare nachauchi ja 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 ता मन प्राण शरीर भितर तू जेते प्रकार नृत्य करि परिबु कर किंतु पछरे थाई कि मु ताको सपोर्ट द मोमेंट से तोर नृत्य अपसरी आसीबो खसी आसीबो पछेई आसीबो से मते पाइबो आ सेते बेले तू आ ताको ता तोर दास करि कि रखि परिबु सेते बेले ये हबो हनुमंता आ तोर ईश अनीशरु ईश इन ईच वन ऑफ अस there is the static consciousness the witness supporting the activity of nature it is the being of the Purusha that forms the ground breast mane kon it forms the platform it gives a forum it gives a ground on which nature performs her dance of life जीवन टी नृत्य करूची तो को गोटे मंच रे छिड़ा हेकी नृत्य करूची कि नै से मंच प्रोवाइड करची पुरुष आ नृत्य टी होची प्रकृति रो से मंच प्रोवाइड करिछि आत्मा आ से नृत्यटी होछि से आत्मा रा प्रकृति रा माया हैप्पी इनर ही लाइज बीनीथ हर फीट ही इज नॉट हेल्पलेस से ता पाद तळे पडिछि माने हेल्पलेस नुओ से निज पाद को ऑफर कर देछि ता पर मु किछि दिन तळे ऑफ कोर्स फ्रॉम YouTube माने आई एम जस्ट टेम्प्टेड आज तो वी कैन टेक अ फ्यू मोर मिनिट्स मांकर ही करुणा because sometimes you listen to a few stories few anecdotes just because it has a greater implicity ahead so mu ei kathati ko ei last 2-3 din tale hi sunichi and now I could understand that this is the best reflection or the best point to share once upon a time राधा और कृष्णंकर जो सब सखा सखी माने थिले तांको भितरे गोटे द्वंद्व है गोटे झगड़ा है गोटे मिनिट तांको भितरे गोटे झगड़ा युद्ध कौन युद्ध हला ना when it comes to music when it comes to singing badana gayana then who is better सखा मानंकर कृष्ण ना सखी मानंकर राधा दी जन भितरे किए
कारण आपण माने जानछन्ती राधा इज नॉट एन इनकार्नेशन ऑफ लक्ष्मी. राधा इज कृष्ण स्वयं. कृष्ण और राधा एक. It is that aspect which at the level of the vital evolution was necessary to split as two, so that both could be brought one through that process of whatever is se bishay bahut sara alochana hai. I will not get into that. ame sethu sakha manankar kahibar thila, let us have a competition jouthre Krishna and Radha both will come and they will present themselves to the entire world, and let's see how the entire world, the entire universe responds to their act of music. ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଗାୟନ ବାଦନ ଯାହା କରିବା କଥା କରିବେ. କୃଷ୍ଣ ନିଜର ବଂଶୀ ବଜାନ୍ତୁ, ରାଧା ତାଙ୍କର ଗାଇବେ ଯଦି ଗାଆନ୍ତୁ, ଆଉ କଣ ବଜାଇବେ. let us have a competition, ଆଉ ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି. ତ ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ କରାଗଲା. କହିଦେଇ ଗଲେ ସବୁ ସଖା ମାନେ କି अमक डेट रे करवा कंपटीशन टी जमुनार ए कूल आम कृष्ण को नहीं आसबू, तुम राधा को नहीं आस, ये युद्धटी करा जाऊ. तेबे सखी माने कहले कि युद्ध तो हम पुणी तो किसी गोटे कंपटीशन हेले रिवार्ड हेबा दरकार. कौन रिवार्ड हम? तो कृष्णंकर सखा माने कहले हौ या करबा, जी हारिबो सी अन्य जनकर दासत्व ग्रहण करिवो. तमे जाई कि श्रीजी को बा राधा को कह कि जदि सी हारीगले ताले सी कृष्णंकर दासी होइजिबे, आ जदि आमे आम सखा तरफ रु कहि दउछु जदि कृष्ण हारीगले ताले सी राधांकर दास होई. तो ना कृष्ण अछंदी ना राधा. सखा सखी माने तांका भितरे ए कंपटीशन टी को प्लान करी गोटे तिथि बार ठीक करी दुई जन को डाकी. तबे कृष्ण निजर बंसी को नेकी आसले. और कृष्ण जेतेबेले निजर बंसी वादन आरंभ कले, आकाश रे सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र समस्ते उठी आसिले. देवता मान निजर वास्तव स्वरूप रे. ब्रह्मा रुद्र इंद्र वरुण अग्नि वायु समस्ते चली आसिले आकाश. अनेक आदि अनेक अप्सरा माने गंधर्व माने समस्ते जेते 33 कोटी देवता थिले समस्ते आसिकी से कृष्णंकर बंशी वादन रे एपरि भाव रे मोहित हो गले जे पूरा संसार टी जेमती जड़वत से बजेला जाई पूरा जड़वत थिले. आ जेमती जेमती से निज मधुर स्वर प्ले करने को आरंभ करते सेमती समस्त भितर नूतन जागरण सृष्टि होता. जेमती एमती कृष्णंकर बंशीटी अटकी जाइए समस्ते आउ थे जमी मूर्छित होकर पड़गले. जे जुआड़े सब जीवा कथा चली. तेणु सखा मैंने कहले आउ कौन कंपटीशन कर याठू अधिक आउ कौन हो पार जो जी पूरा संसार को सम्मोहित मोहित कर से भली वादन जेतबेले निजे पुरुष श्रेष्ठ कृष्ण कर सारे से आउ कौन ये कंपेयर कर राधा को कह देख सी अच्छा कि ना सी भी मूर्छित हो पड़ जाइए जे सी आसिकी कृष्णंकर दासत्व ग्रहण कर. देन से माने कहले कि राधा बिल्कुल अच्छा. नाउ इट इज द टर्न ऑफ राधा टू प्ले इट. तो राधा विल नाउ प्रोड्यूस हर पार्ट ऑफ म्यूजिक. तो बीणा राधा चोज और राधा पाख को बीणा अणागला. से बीणा उपरे राधा जितेबले गायबा पूर्व बीणा को सेट करने प्रथम झंकार टीए देइचंती. स्ट्रिंग टी को केवल गोटे झंकार देइचंती. से मोमेंट रे पूरा सृष्टि रे एमती प्रलय वाइब्रेशन क्रिएट हला. पूरा चारियाडे जमती झड़ झंझा पवन जमुना उछुली की समुद्र भलिया उठा आरंभ कला. आकाश रे पुणी आउ 33 कोटी देवता चली आसिले. पूरा चारियाडे जमती गोटे घोर वातावरण पूरा एमती अतिरंजित हो गला. चारियाडे पूरा सागर नदी समस्त उछुलिबा को आरंभ करे. आकाश रु ग्रह नक्षत्र खसिबा को आरंभ कले गोटे झंकार मात्र रे. आउ जेतेबेले झंकार टी को प्रोड्यूस कला परे सेथिरे तान देवा को आरंभ कले गोटे सुर भिड़ा को आरंभ कले. से सबु देवता आसिकी ब्रह्मा रुद्र इंद्र मरुत समस्ते आसिकी श्री राधा पाद तले कहले कि आपणकर संगीत को धारण करने शुणा ए संसार योग्यता नहीं. ये संगीत शुणा मात्र प्रलय आसीज आहारी एक्जिस्टेंस रही. आपण ये गायन को ये बंद कर दिंतु नचे ये समग्र संसार प्रलय भितर को निमज्जित हो.
एतिकी कहवा मात्र राधा बंद करदेले आउ समस्ते जे जा जगह को पुनश्च चलीगले सखी माने सब खोजिला बेलू आउ सखा माने भी सेठी नाहांती से कुआड़ सब छिनछत्र होइकी चली जाइछन तांको खोजी खोजी आनले खोजिला बेलू कहले कि हो को एबे किए कार दासत्व ग्रहण करिवो कृष्ण कुआड़े गले ना कृष्ण भी हजी गले देखिला बेलू कृष्ण राधांकर पाद दीटा को धरी निजर पीतांबर वस्त्र उपरे रखी बंशी को तांको पाद तले थोई राधांकर दासत्व ग्रहण। Now this could be a very beautiful elaboration of a story, of a tale, of a fable, but mystically जेतବେଳେ ମୁଁ ଏଟା ଶୁଣିଲି I could well relate it that this is how Purusha has accepted Prakriti. He knows that she is the creatrix, she is the executrix. ये संसारटी को गढ़िबार साहाय्य करछथि तेनु मु तांकर दासत्व एति पय ग्रहण करिछि because the world responds to her, the vibration starts from her, the consciousness gets ruled from her, but the moment ते निजर कृष्णत्व प्रभुत्व को आसुचंती राधा तांकर ही हेजिबो the shakti surrenders to the Purusha, the Ishvara, and the Prakriti surrenders to the Purusha. His breast he offers for her cosmic dance. All could happen because of which our lives are the quivering theater our stage re at individual level. जदि तांको बक्षटी से दे देछथि ए विश्व नृत्य पई द विश्व प्ले पई द यूनिवर्सल प्ले पई तबे in what happens at individual level of which our lives are the quivering theater. आम जीवन गुड़िक मध्य गोटे गतिशील थिएटर भावरे रंगमंच भावरे जेउठी आम स्तर रे मध्य इंडिविजुअल स्तर रे एपरी पुरुष प्रकृतिर मधुर नृत्यटी प्रत्येक मुहूर्त रे घटी जाउछि एंड नन कुड बेयर बट फॉर हिज स्ट्रेंथ विद इन ए नृत्यटी को प्रकृतिर हो बा आत्मा हो बा शक्ति हो केही बियर करि पारंतेनी जदि पुरुष न थांता। कृष्ण अछंती बोली राधा निजर नृत्यटी को करि पाले, शिव अछंती बोली शक्ति निजर तांडव करि पाले। तेणु से जेते ऐश्वर्यवान माधुर्यवान सौंदर्यवान हेउथौ ना कहीं पुरुष अच्छी बोली तारे सब रूप सकल अच्छी येट नन वुड लीव बिकॉज ऑफ हिज डिलाइट। ये गोटे सुंदर शैली कथाटी को माने कहवा कथाटी को पछरे रखी न कहवा कथाटी को आगे रखिबा एंड नन कुड बेयर ये होची नास्ति सूचक बट फॉर हिज स्ट्रेंथ विद इन माने because of his strength within one could bear yet none would leave ehi ruhanteni because of his delight tankara ananda achi boli samaste achanti because of his delight yet none would leave because of his delight each life is a theater of this living dance the brunt of the dance could not be borne by us but for his strength within तांकर स्ट्रेंथ अच्छी बोली भितर नृत्यटी संभव होची however strenuous it may be we are not prepared to leave it because of the delight that streams from him ए नृत्य रे गोटे आनंद रहिची गोटे लास्य रहिची गोटे माधुर्य रहिची गोटे सौंदर्य रहिची गोटे ऐश्वर्य रहिची जे आसकासे मनुष्य प्रत्येक क्षण आनंदर जेकोसी स्तर रे मध्य जेते कष्ट होना काहे जीवन रे से कोठु ठोपे आनंद पाइबा पई प्रकृतिर दास है। However strenuous it may be, we are not prepared to leave it because of the delight that streams from him. We participate in his delight and therefore are unwilling to forego the experience. तेनु हमें ए एक्सपीरियंस छाड़ीबा को चाहुना सेति पई ए आनंद को परित्याग करबा को चाहुना सेति पई हमें कुआड भी जीवा को चाहुनु जेते कष्ट हो जेते जन्म लागु चक्र पर चक्र साइकिल पर साइकिल फेरिकी आम यही जगत रे पुणी थरे आनंद प्रक्रिया रे द्वैत भाव सहित यही पुरुष प्रकृतिर नृत्य सहित यही ईश्वर शक्तिर गढ़णी सहित यही जगत सहित आमर गोटे एपरी संपर्क गढ़ी उठी अति चमत्कार भाव रे श्रद्धावान मध्य कथाटी को कहउचंती दिस इज अ ट्रेडिशनल इमेज व्हिच एक्सप्रेसेस द ट्रुथ which Sri Aurobindo is showing us here.
Kali, the dynamic force, dances in time and space, shaping all the many different forms and forces and events. But her ever-changing dance is supported by the ever unchanging existence of the एते प्रकार भंगी रे नृत्य करि पारुची काइना सी छिडा हेची गोटे very strong base upare, that is the ever unchanging existence of the Lord. Our lives are the theater, the stage where that dance is taking place. We are alive, we are moving with that dance, which is so tremendous that none of us could bear it if the Lord's strength were not within us, supporting the dance. Because he is in us, we share in his delight. आनंदर ये गोटे विराट रहस्य जे मनुष्य आनंद पछरे काहेकि पड़ी भावर अछि बा आनंद पछरे परी दौड़ची काहेकि प्रत्येक मुहूर्त रे से तो ताको संभाली भी पारंतानी केवल भीतर जणे रहिछि जे से रस को आस्वादन करबा को चाहूछि. That Lord which is enjoying as the enjoyer of all the ecstasies, all the essence is within. तेन त्यक्तेन भुञ्जिता मा कृधा ईशवास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिता मा कस्य. ये भितरे रहिछि, he is the enjoyer, he is the enjoyer. किए कहार भक्ति करिवो एकत्वर भाव जेतेबेले आसीबो केवल सिए ही थिबो, सेठी प्रिया प्रियतम रो भाव भी नथिबो किबा भक्त भगवान रो भाव भी नथिबो, सब एक ही जेति. Sorry, the two who are the one. So this is a beautiful context to close today's class. I think the next part also begins with again the work principle. This was a little bit on the delight principle, so let us close us today here. The two who are one are the secret of all power. The two who are one are the might and right in things. Today's class, I think, is just a beginning of what we are going to discuss in the coming classes. Thank you so much.